हेलो एवरीवन, दिस इज योर बॉलीवुड स्पाई यानी कि आरजे दिव्य सोलगांव। और इस वक्त मेरे साथ मौजूद है दो बहुत ही कमाल के कलाकार, जेनिफर विंगेट एंड तनुज विरवानी, स्कोडेम सीजन 2 के लिए। गाइस, सबसे पहले तो कॉन्ग्रेचुलेशंस, डबल कॉन्ग्रेचुलेशंस, क्योंकि सीजन 1 तो धमाल हो ही चुका था। उसके बाद लोगों ने लॉकडाउन में वापस देखा, काफ़ी लोगों को पसंद आया। एंड नाउ सीजन 2, क्या ट्रेलर है यार, ऐसा लग रहा है बस आई वांट टू वॉच इट टुडे, अभी का अभी। आप लोगों से जानना चाहूँगा रिएक्शंस एंड फीडबैक्स कैसे रहे। आई थिंक रिएक्शन तो यूनानिमसली बहुत ही पॉजिटिव रहे हैं। इनफैक्ट यूट्यूब पे अगर आप नंबर्स देखोगे, इट्स ऑलमोस्ट 25-26 मिलियन। और सोशल मीडिया के थ्रू हमें अच्छे रिस्पॉन्सेज आए हैं, एंड यू अंडरस्टैंड कि लोगों को क्या पसंद आ रहा है। फॉर एग्जांपल द जिंदाबाद रैप सॉन्ग, पीपल आर रियली लाइकिंग दैट। जिस तरीके से इसे शूट किया गया है, पीपल आर रियली लाइकिंग दैट, द होल थिंग, यू आर माउंटिंग द रिटर्न ऑफ मोनिका मेहरा। पीपल आर लाइक, हर फैंस इन पर्टिकुलर आर जस्ट losing their minds, and that's a great start for us, Absolutely, so, absolutely. yeah. I mean, I'll just add to that it's it's been a long wait for us and for the fans, and I'm happy that trailer ka jo reaction aaya, people are looking forward to watching it, although the wait has been so long. So I'm excited, I'm nervous, I'm looking forward to it. जब सीजन 1 पे पहले चलते बात करते हैं, ये आप लोगों ने तब किया था जब ओटीटी नाम का चिड़िया, तो किसी को पता भी नहीं था व्हाट इट वाज, बहुत कम शुरुआत में हुआ था। एंड जैसे मैंने बताया, लोगों ने वापस इसे देखा जब लॉकडाउन हुआ था। बट आई एम श्योर उस वक्त आप लोग को काफ़ी कुछ दिक्कतें आई होगी, करे नहीं करे, स्केप्टिकल होंगे, शुड वी बी पार्ट ऑफ दिस, क्या क्या चल रहा था? Absolutely not. I mean, मैं तो frankly already घुस चुका था, so I was pretty early on. I'd gone on the ground floor only, तो because I had already had inside edge, so I knew that okay, there is a lot of power that this medium can have, OTT का जो medium है। तो जब समर खान मेरे पास आए और उन्होंने कहानी मुझे नरेट किया, I really liked it। और जब मैंने उनसे पूछा कि और कौन लॉक्ड है शो के लिए, तो उन्होंने बोला जेनिफर विंगेट, सीमा बिस्वास, रजत कपूर। I'm like, यार, it's a no-brainer because everybody in their own right is an amazing actor, and I would love to share screen space with these people, and if they are saying yes, they obviously see something in this. तो मेरे लिए ऐसा नहीं था कि पता नहीं करूँ ना करूँ, so it was I think nice. for me also it was just मेरा वो transition from TV to OTT transition के लिए जो मुझे project चाहिए था, this was exactly what I wanted, to play a character from the armed forces, to be returning to Balaji for my OTT debut. My TV debut was also with Balaji. OTT debut was also with Balaji. Plus, the story was so good. And again, like he said, to be with actors like Rajat Kapoor and Seema Biswas and Tanuj, I hadn't seen any of his work, but when I met him and we just clicked, and I'm like, I made the right decision, and it was just amazing. सो फैंस ऑफ कोर्स जानना चाहेंगे कि इसमें क्या इस बार क्या नया हो रहा है, व्हाट्स न्यू, स्नीक पीक कुछ दीजिए। बहुत ट्रिकी सवाल है, ये कैसे आंसर करे। आई मीन, द स्टेक्स आर हायर, कॉन्स्पिरेसीज बड़े हैं। जिस तरीके से मोनिका और उनकी टीम इस बार केस सॉल्व करेगी, इट इज क्वाइट न्यू एंड फ्रेश। We have some new characters also this time in the show. हाँ, और जिस तरीके से मैं शो को देखता हूँ, इट्स ऑलमोस्ट लाइक आई एम द वॉटसन टू हर शर्लॉक, yeah, she's the one, and I'm always like aiding her in her efforts. वो सब तो है ही जो आपने सीजन 1 में ऑलरेडी देखा है, बट अपार्ट फ्रॉम दैट मेरे ख्याल से द इमोशनल कोर ऑफ सीजन 2 इज अ लॉट स्ट्रॉन्गर, बिकॉज पहले सीजन में वी ऑब्वियसली हैड टू टेक सम टाइम, सेट द टेबल की ठीक है, ये है मेजर मोनिका मेहरा का कैरेक्टर, ये है अंगद संधू का कैरेक्टर, जितने भी और कैरेक्टर्स थे। इस बार आप सब ऑलरेडी जानते हो, पहचानते हो कि ये कैरेक्टर्स कौन है, सो वी कुड लिटरली from the first minute of this new season hit the ground running, and that's what we've done also. इस बार sorry, इस बार mission है, plus there are a lot of personal things also that we talk about that are involved in the show. काफ़ी it's a thriller at the end of the day, तो काफ़ी सारे twists and turns भी है, और just overall I think इस बार the show is much more intense. is obviously action तो है ही है, एंड हम मोनिका के थोड़े चाइल्डहुड में भी जाते हैं कि देर आर सर्टन मेमोरीज, देर आर सर्टन इंस्टेंसेस दैट हैव हैपेंड, तो उसमें थोड़ा जाकर हम देखते हैं कि क्यों, कब, कहाँ, कैसे।
how much the past impacts the present. Yeah. सो मेजर मोनिका की बात करेंगे तो सीजन 1 में जो आपने उसमें एक्शन किया था फिजिकली काफ़ी टास्किंग था, वी हैड स्पोकन अबाउट, अब वापस इतने गैप के बाद वापस गोइंग टू दैट कैरेक्टर मस्ट हैव बीन मोर टफर. No, in fact, it was a bit easier for me because I'd already had that. I'm sorry, I'd already had that foundation. When I was shooting for season 1, तभी मेरे पास बिल्कुल आइडिया नहीं था कि क्या करना है, कहाँ जाना है. हम बेसिक से हमने शुरू किया था. So going into season 2, at least I had that basic foundation कि I know कि हमने इतना कर लिया है, अभी हमको इससे बेटर करना है. And the idea is to look effortless when you're doing action scenes. If that comes across and you've made it. So that was always my and I love doing action sequences because as a female actor there are not many opportunities that you get like that. So I really look forward to action sequences. I look forward to the training because it's just so refreshing to do something different and new. So Tanuj, season 1 and season 2 के बीच में you तो had a dream run, मतलब back to back last year तो you had fantastic shows and everything. तो वो उसके बारे में कुछ बताइए. Well, it has, as you said, it's been quite a dream run all the way since 2017 when Inside Edge came out. And I just feel I'm one of those actors who ended up being at the right place at the right time. लोग मुझसे and a lot of hard work. Yeah, sure. I mean, लोग मुझसे अक्सर पूछते हैं, did you consciously take the decision to get into the OTT space and not do films? I'm like, नहीं यार, picture ही नहीं मिल रहे थे. I did not want to be the hero का दोस्त या heroine का भाई. It was not working at that point, and luckily OTT came and really came to the rescue. And obviously when you have a show like Inside Edge, which universally does well, the offers start mounting up. And I would have to give a lot of credit to Codem as well, because Codem season 1 was still very early on in this entire thing. As you said, I had a bunch of releases last year, but I always believe you're only as good or as bad as your last project, and it's because of the Codems and the Inside Edges and everything else that people have faith in me today. Producers have faith in me that okay, हाँ, अगर हम इसे ऐसा रोल भी देंगे तो वो शायद कर पाएगा, And sometimes you fail, sometimes you succeed, but the important thing is to keep trying and keep pushing your limits. I mean, Jen's been acting for the longest time, 18 years now, and even now she's discovering new facets to her own personality, to her acting chops. She's doing action like she's never done before, and yeah, that's pretty much what I aspire to do as well. To keep trying and pushing the boundaries of what is possible for an actor to do. Wow. बहुत कम, अगर हिंदी फिल्मों की बात करेंगे तो हमारे यहाँ बहुत कम ऐसी एक्ट्रेसेस हैं जिन्होंने आर्म फोर्सेस वाले रोल्स निभाए. टबू है, एक दो जन के नाम आते हैं. तो आपसे जानना चाहूँगा क्या रीज़न हो सकता है इसके पीछे. यू हैव बीन पार्ट ऑफ दैट वेरी निश लिस्ट. People don't make such roles for women anymore. I mean, it's very rarely do, because एक वो नोशन है कि फिल्म नहीं चलेगी या शो नहीं चलेगा. बट आई थिंक अभी धीरे धीरे वो थोड़ा चेंज हो रहा है. आई एम नॉट सेइंग कि वो पूरा चेंज हो गया है, बट पीपल आर हैविंग मोर फेथ इन वुमेन प्लेइंग द लीड for the movie or for their shows, coming up with strong characters like that. पहले नहीं होता था. पहले you needed हीरोइन सिर्फ रोमांस के लिए चाहिए होती थी या फिर रोने के लिए. And I've done so many roles like that on TV, right? But अभी चीज़ें बदल रही हैं. People are open to experimenting with content, with actors also. They are open to experimenting with their characters. ये नहीं कि मेरे को विलन नहीं करना है या हीरोइन नहीं करना है या हीरो नहीं करना है. अभी वो ensemble cast का भी it's we just have started that trend. It's going to take some time to establish itself, but things are changing now, and I hope they change for the better. Of course. बट आपने जब इनसाइड एज किया था तो कभी सोचा था कि आज OTT मतलब इतना बड़ा हो जाएगा? नहीं, I was not getting any offers that time. मेरे तीनों पिक्चर आके फ्लॉप हो गई थी बॉक्स ऑफिस पर. तो लोग कहते कि यू आर इन बॉक्स ऑफिस जेल, टेक 2 years ऑफ, उसके बाद वापस आ जाओ. एंड आई वाज रनिंग आउट ऑफ टाइम. एंड तब तो एक्सेल इन्वॉल्व भी नहीं था. इट वाज अनदर प्रोडक्शन, इट वाज अनदर प्रोडक्शन हाउस दैट वाज इन्वॉल्व्ड. एंड हमने ठीक है ऑडिशन दे देता हूँ, इट्स अ क्रिकेट बेस्ड थिंग, एंड इट वाज अ जिस्ट दैट इट वाज अ थिंग दैट यू हैड टू नो हाउ टू प्ले cricket. So since I do play cricket, I'm like, let me give it a shot. What's the big deal? Yeah, I mean, nothing was happening. Or then they said okay, and then project shelf हो गई. And then I remember it was 5th of May 2016. It was the day One Night Stand released.
and I had taken my parents and we had gone to watch it. During the interval, I get a call from one of the associates at Excel, and he's like, "Hey, listen, we're reviving the project. We're going to be producing it. क्या आप अब भी interested हो? If you are, then please come to our office and let's sign it." And that's pretty much how it happened. So it's weird. Life is weird. 5th of May Amazing. 2016. Yeah. Amazing. So technically that's the day I feel my life changed as opposed to when the show came out, you know, because yeah. I do think so. I also feel like it was probably like maybe if we had like a fancier star cast or it was better promoted, it might have done well. I'm eternally grateful to KK sir, God bless his soul, for the 2 beautiful songs that he gave us in that, you know. So yeah, it doesn't matter whether film performs well or no, as long as I have amazing memories, and anyways all the content that we put out will outlive all of us, so Yeah. that also matters, you know. Yes. I don't know. It's still season 2. एक बहुत ही abrupt ending हुई थी season 2 की. अब season 3 का I can't say anything about that. एंड आई एम श्योर आप लोगों को दोनों को इनके ही जो शोज है खतरों के खिलाड़ी से बिग बॉस, ये सब के लिए अप्रोच तो किया ही गया होगा, क्यों? See, you know, I have a lot of respect for a lot of my friends also, वो reality shows करते हैं, but I don't think मैं ऐसे shows के लिए बना हूँ. वो bandwidth ही अलग है. I'm very happy doing fiction content right now. So no, I don't think you'll see my me. answer is the same. I don't think you'll see me in that. हाँ, you know, लोग बोलते हैं कि आ जाओ, fame मिलेगा, पैसे कमाओगे, ये वो, which is all great, and you know, those who can do it, like my hats off to them. But Yeah. You also have to know. Stunts तो कर सकते हैं. You done such action आपकी. Yeah, हाँ, but I but like to do it for I would like to do it for a role, a particular role. Yeah. as opposed to Yeah. like, yeah, I don't know. Not to compete with Yeah. anyone.